morning, my dear children. A very happy new year to all of you. I hope you enjoyed a lot in your holidays, right? But now it's study time. So today we will start a new topic of GK, that is festivals. Beta, we live in a country where festivals are celebrated with joy and fun. आपको पता है ना, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे फेस्टिवल्स बहुत ही हंसी खुशी मनाए जाते हैं. फेस्टिवल्स गिव अस द मैसेज ऑफ यूनिटी. जो बेटे फेस्टिवल्स हैं वो हमें ये मैसेज देते हैं कि आप, मैं, हम सब एक हैं, कोई किसी से डिफरेंट नहीं है. एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स. हर साल बेटा हम बहुत फेस्टिवल्स बनाते हैं. आपको पता है ना, अभी हमने न्यू ईयर मनाया, देन वी विल सेलिब्रेट लोहड़ी, देन वी विल बी सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे. लाइक दिस फेस्टिवल्स आर कमिंग एंड गोइंग. देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट. Festivals bring happiness. Festivals make our life colorful. People sing and dance during festivals. आपको भी पता है, हम सब जब भी कोई फेस्टिवल मनाते हैं, that we people are very happy. We used to sing and dance on the festivals. We celebrate religious festivals like Diwali, Dussehra, Christmas. In the same way, we celebrate seasonal festivals like Holi, Baisakhi and Basant. Beta, there are some national festivals also that are celebrated here. Every festival has its own importance. हर फेस्टिवल बेटा अपने आप में important होता है. Okay? There are some major festivals celebrated in India. So, let's have a look. Diwali is known as the festival of lights. People decorate their house with candles and diyas. Diwali is celebrated as the welcoming of Lord Rama to Ayodhya. बेटा, इस दिन भगवान राम 14 years के बाद अपने घर अयोध्या वापस आए थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है. People burst crackers on Diwali. Crackers यानी पटाखे. आप भी चलाते हो ना दिवाली पे पटाखे? सब लोग दिवाली पे पटाखे चलाते हैं. आप कई तरह के पटाखे चलाते हो, जैसे फुलझड़ी, अनार, चक्री चलाते हो ना. आपको पटाखे चलाने अच्छे लगते हैं ना बेटा? Christmas is celebrated on 25th December every year. बेटा, हर साल 25th December को हम क्रिसमस मनाते हैं as the birthday of Jesus Christ. 25th December को बेटा जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है. People decorate their house with Christmas trees, bells and stars. आप भी सारे अपने घर पे क्रिसमस ट्री लाते हो ना, उसको डेकोरेट करते हो. आप भी स्टार्स और बेल्स के साथ भी डेकोरेशन करते हो. People go to church to do the prayers. Children eagerly wait for the Santa Claus to get their gifts. आप भी कहते हो ना, Santa Claus आएगा, हमें गिफ्ट देके जाएगा, है ना? You like Santa Claus? आप भी बोलते हो Santa Claus आएगा क्योंकि आपको गिफ्ट चाहिए होता है ना? Gurpurab is celebrated by the Sikhs. On this day, people go to Gurdwara to offer their prayers and have a meal called langar. बेटा, processions are taken out on this day, जिसे कि हम नगर कीर्तन कहते हैं. Eid is celebrated by the Muslims. Muslims go to the mosque to offer prayers. Sweets are distributed on this day. इस दिन बेटा मुस्लिम्स मॉस्क जाते हैं अपनी प्रेयर्स करने.
They hug each other and wish Eid Mubarak. बेटा एक दूसरे को गले लगाकर वो एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं. Holi is a festival of colors. Everyone enjoy this festival. They throw water balloons on each other. They color each other's face with gulal. आपको भी होली खेलना पसंद है ना? लेकिन बेटा we should play होली with dry colors only. हमें गीले रंगों के साथ नहीं खेलना चाहिए. Now beta, all of you take out your notebooks and write down date and day. Now बच्चे, write down the question here. Name, N-A-M-E, name, 5 festivals, F-E-S-T-I-V-A-L-S. The question is name 5 festivals. Now, please tell me the name of the festivals. Can you tell me? Please try. Yes, Holi. So, okay, write down here A1 and write down here Holi. H-O-L-I, Holi. Speak up with ma'am, beta. H-O-L-I, Holi. Speak up again. H-O-L-I, Holi. Number 2. Diwali. D-I-W-A-L-I, Diwali. Speak up. D-I-W-A-L-I, Diwali. D-I-W-A-L-I, Diwali. Number 3, Gurpurab. Write down G-U-R-U-P-U-R-A-B. Gurpurab. G-U-R-U-P-U-R-A-B. Gurpurab. Number 4, Eid. E-I-D, Eid. Speak up. E-I-D, Eid. Number 5, beta, Christmas. C-H-R-I-S-T-M-A-S, Christmas. C-H-R-I-S-T-M-A-S, Christmas. Now let's repeat beta. Name 5 festivals. Holi, Diwali, Gurpurab, Eid, Christmas. My dear children, write down this question in your notebook in a very neat and clean handwriting. And beta, make sure that you write down the first letter capital. Okay? And beta, you are to learn the spellings also. Thank you so much. Bye-bye.